Hello everyone, I'm Ritika from IELTS Racers, and in our today's video we are going to learn how to write a complaint letter, that too in 10 minutes. आपके IELTS एग्जाम में जनरल मॉड्यूल का जो टास्क 1 है राइटिंग का, दैट इज अबाउट द लेटर एंड इट इज क्वाइट ऑफन व्हेन वी रिसीव कंप्लेंट लेटर्स इन दैट. तो आज हम पढ़ेंगे कि कंप्लेंट लेटर हमें कैसे एड्रेस करना है. चाहे कंप्लेंट लेटर हो फिर कोई और लेटर हो, हर लेटर में कुछ चीजें हैं which are very important to understand. First is the task. In any case, we cannot miss the task response. It is an absolute must. तो जब भी आपको कोई क्वेश्चन मिलेगा तो it is not like that these three obvious pointers जो आपके टास्क हैं सिर्फ वही कवर करने हैं. आपका जो मेन क्वेश्चन है, there are certainly some hidden tasks involved and you need to highlight those tasks as well. Okay, so understanding the task. Second is idea generation. Now when you have understood the question properly and now you know कि आपको कौन कौन से टास्क हैं जो कंप्लीट करने हैं अपने लेटर में, उनके बेसिस पे अब हम अपने आइडिया जनरेशन करेंगे. अब आइडिया कैसे जनरेट करोगे? आइडिया जनरेशन के लिए इट शुड साउंड लाइक अ स्टोरी. ऐसा नहीं होना चाहिए पैराग्राफ 1 कहीं और है, पैराग्राफ 2 इज टॉकिंग अबाउट समथिंग एल्स व्हिच इज नॉट एट ऑल रिलेटेड विद द स्टोरी इन पार्ट 1. इट शुड नॉट हैपन एट ऑल. जो भी हमारे तीनों पैराग्राफ्स हम लिखने वाले हैं दे शुड बी इंटरकनेक्टेड सो दैट आपका जो कोहेरेंसी है वो कहीं भी मिस नहीं होना चाहिए. लास्ट इज द टोन ऑफ लेटर. While writing a letter, tone is also something which is very important because क्या होता है like you know there are several students what they do जब भी आपको कोई disappointment show करना है और you are writing a complaint letter, then suddenly students go into the harsh tone. So we need not to do this. हमेशा अपने टोन को पोलाइट मेंटेन करके रखना है. जो भी आपके सजेशंस हैं या कंसर्न्स हैं सब पोलाइट टोन में होंगे और हमेशा कंस्ट्रक्टिव होने चाहिए. Now let's start with letter writing. This is the topic on which we will be writing today. Let me read the question for you. You have recently bought some furniture and it was broken when you received it. Write a complaint letter to the store manager. In your letter, you should tell what you bought and when, how was it broken, and suggest how the problem could be solved. Now, as per our previous slide, what we learned is understanding the task. तो सबसे पहले task समझते हैं. Now, first thing is we have recently bought. What we bought? Some furniture. And what was the concern is that it is broken. Now, what we need to do? We need to write a complaint letter. To whom? To store manager. So, अब यहाँ पे मैंने जितनी भी चीजें ये highlight की हैं, we will add these highlighted points in a letter. Now, these three obvious tasks जो हमें cover करने ही करने हैं, that is what you bought. So, what it can be? Any furniture that comes to your mind, maybe a sofa set or maybe a dining table or any other furniture जो भी उस टाइम आपको स्ट्राइक करे, talk about that. बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है इस चीज़ पे. After that, when you bought, when we bought it recently. So जो भी आप टाइम फ्रेम दोगे वो recent होना चाहिए, maybe last week or last month, maybe like yesterday only. It should not be like this. 2 years back I purchased that. So understand this thing that we have purchased it recently. Now, अब हमारा फर्स्ट जो पॉइंटर था उसका हमारा टास्क प्रिपेयर है. आइडियाज वी हैव जनरेटेड. अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे टास्क पे. व्हाट इज दैट? हाउ वाज इट ब्रोकन. अब उसके भी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं. मैं यहाँ आपको बहुत सारे आइडियाज दूंगी अभी कि वो किस किस तरीके से ब्रोक हो सकता है और आप क्या करोगे? एनी आइडिया, यू कैन पिक एनी आइडिया and then you can frame the letter. It should not be like this that I am citing many of the ideas here, so all the ideas needs to be incorporated in your letter. No, not at all. Pick one and write the letter. See, क्या क्या हो सकता है? Maybe like when we were unloading it from the truck, or maybe while shifting it from the entrance into our house, maybe the living room or kitchen or maybe the bedroom. Or last is while transportation. It can be broken at that time also. Now, हमारा सेकेंड पैराग्राफ का जो स्टोरी था दैट इज प्रिपेयर्ड. अब हमारा जो लास्ट टास्क है दैट इज सजेस्ट हाउ द प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड. अब हम क्या चाहते हैं स्टोर मैनेजर से करने के लिए? सो कुछ भी हो सकता है दैट आई वांट फुल रिफंड फॉर माय प्रोडक्ट,
or maybe I can ask for free replacement, or there is something else that I can ask for. It is that it should be repaired at my place, or otherwise if the store needs to take it to the workshop, then the conveyance charges I'm not going to pay. It should be done by the store only. So this is how you will going to address your letter. It should not be the like this letter पढ़ा तुरंत लिखना शुरू. Give yourself some time. लेटर को समझो, आइडियाज जनरेट करो एंड देन लिखो. एंड यू नो दिस आइडिया जनरेशन, अभी तो हमने बहुत सारे आइडियाज डिस्कस किए हैं. अदरवाइज जब आप एक एक आइडिया करके डिस्कस करते हो ना, इट हार्डली टेक 2 minutes टू डू दैट, right? And we get 20 minutes to write a letter. So instead of wasting those 20 minutes no by random writing, no, there is no point of doing that. Understand the question, frame the ideas, and then पूरा एक कोहेरेंसी वाला लेटर जो हमने एकदम स्टोरी बिल्ड किया है, then we will write it.
Okay, now when we have invested our 2 minutes in preparing the entire content of our letter, we are all set to begin the letter. ठीक है, अब ये जो हमने 2 मिनट इन्वेस्ट किए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डू. वाई? अगर आप ये काम नहीं करोगे पहले, आइडिया जनरेशन एंड अंडरस्टैंडिंग द टास्क प्रॉपरली, तो यूजुअली क्या होता है, व्हेन स्टूडेंट्स लाइक आफ्टर जस्ट रीडिंग द क्वेश्चन दे स्टार्ट राइटिंग इट. पेन एंड पेपर है तो what you will do is लिखोगे, इरेज करोगे, you will write it, erase it, और कंप्यूटर बेस में you will type it और delete it. अदरवाइज क्या होगा? अदरवाइज आप क्या करोगे? बीच में अटक जाओगे that what is to be written next now. तो इन सब डिफिकल्ट सिचुएशंस का एक ही एस्केप है, prepare your content wisely and it hardly takes 2 minutes. So instead of wasting the next 15 minutes, better to invest 2 minutes in preparing the content. अब देखो, when we don't know the other person, we don't know the store manager, तो हमने अपना लेटर कैसे शुरू किया है? डियर सर और मैडम. अब जो हमारा पहला वो है पैराग्राफ, उसमें हम क्या करने वाले हैं? हमारा जो पहला पैराग्राफ होगा, हमें उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं डालने हैं. ठीक है, ऐसा नहीं जो भी हमने आइडियाज़ प्रिपेयर किए हैं सारे आइडियाज़ हमने एक ही पैराग्राफ में डाल दिए, नहीं. बहुत वाइजली हम अपना फर्स्ट पैराग्राफ को डिजाइन करेंगे और उसमें हम क्या करने वाले हैं? सिर्फ एक ब्रीफ देंगे टू डिस्क्राइब द पर्पस ऑफ आवर लेटर, सो दैट द अदर पर्सन who is going to read our letter should have an actual picture कि हम आगे लेटर में क्या बात करने वाले हैं. So look at the first paragraph. Allow me to read it for you. What we have written is, I am writing this letter to register a complaint regarding the damaged furniture that was delivered to me yesterday. Kindly allow me to elaborate in detail. अब देखो, in a short and a crisp way, I have covered the entire thing. What I am doing? I am writing a complaint letter regarding what? Regarding the damaged furniture which was delivered to me yesterday. So all the things are covered here. अब in the upcoming paragraphs हम अपना पूरा story लिखेंगे जो हमने 3 pointers के लिए create किया है. See, in this second paragraph, I have generated a story. As we didn't know the other person, so we started the letter with sir or ma'am. Now the other person also doesn't know us, so introduce yourself. So how I begin my first paragraph? I am Maria Johnson and the story is, I visited your store last week on 28th June. I was looking for a 7-seater sofa set for my new home and fortunately I found one in your store that was matching my requirements. I immediately booked it and also paid for the delivery in advance or on the same day. अब हमने इस पैराग्राफ में हमारा जो पहला पॉइंटर था, what we bought and when we bought, we have covered both the things here. तो हमारा जो पहला पॉइंटर था, that is completely covered. Now see, what you bought we have covered and we have also covered when we bought. अब हम क्या करेंगे? अपने दूसरे टास्क पे आएंगे and that was how the furniture got broken. Now when we cover what and when, अब हमें अपना नेक्स्ट पैराग्राफ डिजाइन करना है जिसमें हम बताएंगे हाउ द फर्नीचर गॉट ब्रोकन. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द इशू दैट वी आर एक्चुअली फेसिंग. तो यहाँ पे हमें मेक श्योर करना है कि जो हमारा टोन है वो बिल्कुल भी हार्श नहीं होना चाहिए. यूजुअली व्हाट हैपेंस, स्टूडेंट चूज द हार्श टोन, they choose the harsh words or the wrong words while writing like these kind of paragraphs where they are showing their annoyance. I will also do the same. I will show my annoyance but with a polite tone. Okay, हमेशा टोन को ध्यान रखना है. Please mind the tone while writing the letter. Instead of choosing that harsh tone, focus on soft, mature and convincing tone to your letter. See how I have started this. As promised, it was delivered to my place within 3 working days. Here मैंने बहुत politely बताया कि जैसा मुझे promise किया गया था, exactly within those working days I got my
furniture. Now I have written however. What does it mean? That अब यहाँ पे मैं contradict करने वाली हूँ चीज़ों को, और जो मैंने पहले बोला, जो मैंने praise किया, but अब उसके बाद मैं अपना disappointment show करूँगी. However, the delivery men were in rush as they had to complete the other deliveries also. तो यहाँ पे मैंने highlight कर दिया कि जो delivery men थे, they were in rush, they were in hurry, and that's why they must have mishandled the furniture. So this mishandling I'm going to explain now. Eventually, while shifting the sofa to my drawing room, they mishandled the item, and what happened? Because of the mishandling, the fabric of the sofa got torn. तो यहाँ पे मैंने बहुत पोलाइटली बता दिया कि किस तरीके से जो मेरा फर्नीचर था वो खराब हो गया. आप ध्यान देना इस चीज में कि हाउ आई एम राइटिंग दिस लेटर. मैंने हर सेंटेंस के बाद एक लिंकर से पैराग्राफ को शुरू किया है, राइट? जैसे मैंने यहाँ अपना एक आइडिया खत्म किया एंड आई एडेड इवेंचुअली. अब जब मैं अपना नेक्स्ट शुरू कर रही हूँ आइडिया, तो आई हैव रिटन एडिंग टू माई सरप्राइज. अब ये जो फ्रेज है एडिंग टू माई सरप्राइज, ये शो कर रहा है मेरा अनाउंस, दैट कि मैं कितना फ्रस्ट्रेटेड थी उस टाइम पे टू सी दैट द थिंग दैट आई बॉट, okay, the new furniture, it got broken down because the other people were in rush. So now how I am explaining this? Adding to my surprise, the center table was also scratched at some places. Obviously, when I saw this happening in front of my eyes, I confronted them and they asked me to get in touch with you. तो अब ये पैराग्राफ यहाँ पे हम इसे खत्म करते हैं, और इस पैराग्राफ में मैंने एक पोलाइट टोन के साथ अपना जितना भी एंगर था, ओके, और वट एवर द इश्यूज आई फेस, मैंने सब कवर कर दिए. Okay. Okay, now in our letter we have covered two pointers: what, when, and how. Now we are just left with our last task, and what it was, that what we are looking for any solution of our problem. तो उस solution को लिखते वक्त
भी टोन का बहुत ध्यान रखना है. इट शुड नॉट बी लाइक दिस कि आप बहुत ज्यादा हार्श हो रहे हो एंड हाउ यू आर साइटिंग, फायर योर वर्कर्स, okay, or you are saying like train your workers properly so that they can work with manners or efficiently, hire some educated people to work in your organization. इस तरीके की रूड और हार्श टोन को बिल्कुल भी यूज नहीं करना है. जो भी आप सजेशन दोगे, whatever you are looking for from the store manager, सब कुछ आप बहुत ही पोलाइट टोन में मेंशन करोगे यहाँ पे. See how I have started this paragraph. Therefore, I believe this matter deserves your urgent attention. I started this paragraph with therefore because I have mentioned all the reasons and all the problems that I have faced because of the delivery men. So now, therefore, इसीलिए, what I want is, I believe this matter deserves urgent attention and I'm requesting the concerned person. Okay, I'm not ordering the concerned person. I'm requesting you to take some appropriate action. Okay, now after that, see, I have written, I would appreciate. Okay, otherwise, I have seen many students writing, I will sue you if you will not replace my furniture. ऐसा harsh tone नहीं use करोगे. Avoid using that if you want to score 7 or a higher band. तो हम अब देखो हमने कितने polite tone से इसको शुरू किया. I would appreciate if you could get the damaged item replaced with the new ones or got them repaired as soon as possible. So in this line अभी हमने show कर दिया what we are looking for or what we want to store manager to do. Now I'm mentioning a further line. It is also mentioned in terms and conditions of the invoice that any damage resulting due to transportation of the furniture will be borne by the store. Now see, अभी हमारा जो लेटर का वर्ड लिमिट है, जस्ट बिकॉज आई एम टीचिंग यू हाउ टू राइट अ लेटर, ठीक है, सो आई एम नॉट लुकिंग फॉर द वर्ड लिमिट. अब आप क्या कर सकते हो, वाइल राइटिंग योर लेटर देयर इज नो नीड टू राइट सो मेनी थिंग्स. आप कुछ कुछ आइडियाज को इसमें से एलिमिनेट कर सकते हो. ओके, लाइक जैसे हमने यहाँ पे सोफा का बात किया था, वी टॉक्ड अबाउट सोफा दैट द फैब्रिक गॉट टोन. इफ यू वांट यू कैन ऐड अबाउट द सेंटर टेबल, अदरवाइज यू कैन स्किप इट. इन द सेम वे इन दिस पैराग्राफ हम पूरा ऑलरेडी बता चुके हैं what we want from the store manager. Okay, so if you don't want to talk about the terms or condition, then you can skip that. You can attach the invoice copy only for the reference of the concerned person. Okay, now I have closed the letter while writing, looking forward to a prompt action. Now, yours faithfully, as it was a formal letter. Okay, in my previous video, I told you F for formal, F for faithfully. So, I have written here yours faithfully and closed the letter with my full name. Okay, now we have finished our letter. See, अभी इस पूरे लेटर को लिखने के लिए I took 10 to 12 minutes. Why? Because मैंने 2 minutes पहले जो मैंने बिफोर बिगनिंग द लेटर मैंने 2 minutes को इन्वेस्ट किया था पूरा कंटेंट प्रिपेयर करने के लिए. तो अब उस लेटर को लिखने के लिए इट वाज अ हैसल फ्री एग्जीक्यूशन ऑफ माय लेटर. तो तुरंत इन 10 to 12 minutes आई वाज एबल टू फिनिश माय लेटर. अभी यहाँ वीडियो में आपको लगेगा कि ये तो बहुत लंबा टाइम था, इट took a lot of time, but because I'm explaining it here, so that's why it is taking much time. But all this content you can write it in 10 to 12 minutes. अब हमने 2 minutes पहले इन्वेस्ट किए. अब still after completing our letter we are still left with 5 minutes. अब इन 5 minutes को we are going to reinvest, और what we will do is revision of your letter. जो भी हमने लिखा है अपना पूरा लेटर हम उसे पूरा गो थ्रू करेंगे. मेक श्योर रिविजन में क्या करना है, हमें री रीड द क्वेश्चन, एक बार क्वेश्चन पढ़ लो दोबारा से कि आपने सब वही टास्क कवर किया है या नहीं. आफ्टर दैट चेक फॉर दी स्पेलिंग्स. ओके, नो स्पेलिंग एरर्स शुड बी देयर. अपार्ट फ्रॉम दैट वर्ड लिमिट, you can have a look at the word limit as well if you are appearing for CBT. pen and paper वालों के लिए थोड़ा difficult है, you cannot write each, you cannot count each and every word, but word limit we can check. After that grammar, or if any vocabulary you find that I can use some a better vocabulary, so you can make those changes. See what I have done here, I thought they asked me to get in touch with you. Now after reading I am feeling like this you is not working out, so I have changed it with store manager. Now I am rereading my letter. Okay, I will go through it again. So whatever the changes I feel I will make
those necessary changes in my letter. ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। जो भी आपके फाइनल टचअप्स होते हैं आप यहाँ पे कर सकते हो, लाइक आई एम एडिंग फ्यू वर्ड्स, आई एम डिलीटिंग सम वर्ड्स, और आई एम चेंजिंग सम वर्ड्स इन द लेटर. It is important to do, so make sure to do that in your letter. Spare 2 to 3 minutes for the revision, and definitely you will find out some errors that you want to change. Like here what I am doing is exactly matching the color of my curtains. Okay, the sofa that I was purchasing, instead of my requirements I have changed it like this. So these kind of changes you can make during your revision time. It is very important to do that, right? So make sure to revise the content. Okay, so this is it from my side. I hope that now you all are very much clear that how you can address a complaint letter. If you have any doubts or queries, feel free to put your comments in the comment box. To get in touch with us, check out my description box. I have mentioned all the links there. And don't forget to subscribe the channel to get more such videos. Thank you.